Right there. Feels crazy, yeah. Like, okay, how many of you are like in college, school, whatever? Perfect. No minors here, right? Param's in college as well. Yeah. Yeah, perfect, right? So I'll tell you what, like, you know what? I was 17 when I wrote my first book, Just Friends. So, yeah. So the idea here, working for the same thing. Ask Durjoy, DCA, MBA. Durjoy, shush. No, so yeah. So bottom line was, okay, how many of you here have an interest which is not very conventional? How many like writing? I love writers, yeah. Chumma to all you guys. Acting. Actors. That sadly cannot be a profession, but was a good one nonetheless. So yeah, so my thing was at 17, I was like, you know what, I'm going to do something that is not very conventional. I'll do something that my heart likes. And it paid off. 17, I got my first book. 20, I had my first TV show. 20 years, my TV show was crazy, dude. And then this came out. So I remember at one time I used. Should I ask you more? Or? Yeah, do you guys have questions for us? She looks angry, yeah. By the way, I met you, Param and Arshata. So we remember. Yeah. You're from Malad and you are 18. I'm gonna turn 18. See, I said. She's not legal yet, huh? Oh, yeah. And we are not best friends, we can kiss. Okay, how many of you are the ones who message Durjoy regularly on Facebook? Not regularly. What's the Nigerian there? What's that? No, Iqbal sir comes right here. Please. Come here, sir. Come here first, sir. Please. I think Everyone. this is like the icing of the cake. A big hand for him, everybody. This is the person who actually made Sayukta and Randhir, who actually visualized something which was more than we could actually do on screen. I think that's the biggest surprise we have right here. Yeah, yeah, we'll do one like fancy picture. I thought that I should not miss this opportunity. I didn't even inform him I'm coming. Yeah, yeah. It's one of the best surprises. Well, it's a wonderful moment to be here and watch Sumrit graduating. And I can't say anymore. Okay, everyone. Okay, so Sada Haq, Randhir Sanyukta setup was this guy right here. He's been the best director ever. Round of applause. Yeah. So we have another question. Okay, questions right here. Who's got the question? Wait. Good evening, everyone. Anyone? Everyone. Everyone. It's a pleasure meeting you all. Yeah. I just have You one- sound like a rehearsed debate right now. Actually, I'm very nervous. What are you saying, dude? I'm nervous. Look at this. Okay, I'm just kidding. Hi, what's up? It's been like my dream to meet everyone. Actually, just can't believe I'm standing here right in front of you all. I'm dying to meet you all since the release of the show. The question is, when normally people take to become a writer, like why not commerce? And the thing is, I've been writing like not so well, but yeah, and in India, actually prevailing in our society, writing isn't that much scope as being an engineer or a chartered accountant or an architect has. It's like you say you want to become a writer and people are like, how much you going to earn? You know, What are can I gonna cut do? you at that? I'm sorry, I'm gonna cut you. Never ever. Whoever has writing ambitions here in the group, say that again. Yeah, because you make a lot of money here. Do we? No, we don't. No, we eat vada pav for breakfast and dinner. Precisely. So I'll tell you what, like the power of the writer today in India is that you connect to an audience, you connect to the world out there. I think there's nothing more beautiful than writing down emotions and making other believe in your story. You're God. You create and destroy character. There's nothing more beautiful than that. So never ever again say that writing doesn't work. Yes, the Indian mindset isn't cool enough where people accept it openly. But hey, I did it, yeah.
My Punjabi parents are very happy today. True that, from the Yeah, we are proud Punjabi mama boys, yeah. Like, look at this, yeah. That's how Param and I bonded, yeah. We realized they're mama's boys. Iqbal. Yeah, like, yeah. I remember that name, no. Yeah. But yeah, so yeah, it was the one. So I'll tell you what, there was a time in my life when I really disappointed my parents. And I came up with my first book. And making your parents happy. I know it doesn't sound cool anymore. But it does. I love you guys. Making your parents happy, there is no greater feeling than that. And everyone over here and there, I know, support that feeling. Everyone's felt it in their own special way. That has been my inspiration. Every day, make your mom smile, make your dad happy. Daddy gives you nice checks also, huh, by the way. So yeah, that has been my inspiration. So who's making their parents happy right now? Raise their hands. Yeah, that's it. Look at these dirty teenagers too. Okay, I'm just kidding. Yeah. Any more questions? Talking. I don't know. Go. How many of you hate studies? No, I like studies. No. So I'll tell you what, my parents always knew that I could not be an engineer. Thank God for that. Ironically, I wrote a show about an engineer. Because my experience is that like in first standard I scored like 76%. My parents forced me to take engineering. Like no. Okay, no. I'll tell you what. What is your... So if your dream is alive, don't bother about what you're into. Just finish that and you can just pursue your dream at any age you want. You know, you're like in Sayuta, she wanted to do mechanical engineering. My dad forced me to do mechanical engineering. Like it's almost opposite. So You should meet Kishore then. There is Kishore. Anjo. No. Okay then, yeah. Is it being like, oh fuck, noodles it's being recorded. Okay, next question. Yeah, sorry. Thank you. That's it. Any more questions? Yeah. Okay, wait. Can we... I'm going to talk to you anyway, like after the launch. Yeah, like that. Yeah, hi. Dude, you should get into journalism, huh? Hardcore. Oh, please say that to my father. I want. Listen, I am no radio divine voice here, Exo Star FM. I'm just kidding, yeah. Okay, I wanted go to ahead. ask, have you ever read fan fictions of people, like they write on you? I have seen 750 fan fictions and I've read hundreds of them on you. Have you ever read? I like... No, I think I've read one or two, but never not of me, Pandamni or Vardhan. Angel is not dirty minds. इतने pious sir थे वो तुम इतनी गंदी बातें करते हो? Yeah? Okay. Sumrit Shahi, please a round of applause. Clever, huh? Not good. Okay, but okay, seriously, I really want to do this for like 5 minutes. How many of you have ever gone through this situation where you've had a best friend from the opposite gender? Okay, we'll sit right now. It's too long of standing. Thank you. How many of you? No, there on the left. She is declining it. No, the one on the left just erased. No, you want to talk? Okay, cool. So how many of 3? We will all sit together and discuss my books. Yeah, sure. I would love to, and that's the reason I've come here. Because, like, I was Oh just my god, I want to hug waiting. her. Come, let's do a hug right there. Come. No, come, we'll hug. Yeah, like, all of, no, but high five to you from there, dude. Thank you. But yeah, so yeah, is that all? No, still more, yeah. I'm being damn good right now. I'm just kidding. Thank you. Okay, wait, 1 second. Durjoy, where are you? Durjoy. Guys, can you guys please make a line? I don't know you guys. Okay. Doesn't get it. Param, you are hidden. Still hidden. Shut up. That's it. No, you're still not that way. Okay, got it. Thank you. Thank you guys. Okay. Thank you. Happy reading. पीछे ले जाओ क्या अब आप सोच लीजिए
Please read this book, यार. इधर कर दो ना ऐसे नहीं. No. You want me to sign it? I'm sorry. ये बुक जो है इतना लाइव ऑडियंस कैसे बना प्लीज. बहुत अच्छा लग रहा है. मतलब मैन यश सर है, मैं प्रोड्यूसर्स एंड इतनी क्रेजी इंटेलेक्चुअल एनवायरनमेंट में ये बुक निकल आई, नेवर किस योर बेस्ट फ्रेंड, एंड इट्स अ क्रेजी फीलिंग. क्या मैंने नहीं सोचा मैं 22 साल पे एक और 22-year-old फिगरिंग आउट सीन होता, बट इट्स अ वेरी डिफरेंट स्टोरी. ओके. और आपको क्या लगता है इस बुक का यूएसपी जो है वो क्या है? आई थिंक द ओनली यूएसपी ऑफ दिस बुक इज कि ये फ्रेंडशिप को सेलिब्रेट करती हुई बुक है. हम बहुत सारी लव स्टोरीज पढ़ते हैं इस जॉनर में. आप ये बुक पढ़ेंगे, इस बुक के एंड में यू विल रियलाइज हाउ इम्पोर्टेंट इज इट टू मेंटेन दैट वन बेस्ट फ्रेंड इन योर लाइफ, एंड यू वांट टू गो पिक अप द फोन एंड कॉल हिम और हर. That has been my intention with this book. So it's a book celebrating friendship. It's an olden friendship. So this summer, come fall in love with friendship. परम हर्षिता, आपने इनका बुक पढ़ा है? वो सेल्फी की 72 pages. 73. हर्षिता को तो मैंने जबरदस्ती बोल के भाई पढ़ ले. Hello, everybody knows that मैं अभी बताओ हर्षिता हाँ, अभी 100 बोल दो. एक मिनट नहीं मैं इस पे हूँ, मुझे एक मिनट. हाँ. Shivan was leaving for London. ये पेज पे हो, 74 पेज पे हो, 74 पेज पे हो. इतनी इंटरेस्टिंग है, बट यही प्रॉब्लम हो गई थी मेरे पास कि मेरे पास टाइम नहीं था. पता नहीं ये इतनी इंटेलिजेंट कैसे किसी पढ़ भी नहीं है. कैसे पढ़ That's why I love हर्षिता. ये मेरी बुक से पढ़ लेती है. मैं मेरे दोनों फेवरेट. बट बहुत अच्छी बुक थी. 74 पेजेस पढ़ चुका हूँ मैं. It's entirely a very good book. And see, in the आपको show also, suspense ही बता सकते हैं. in the show also, you will see what you don't expect, because they always say that expect the unexpected. So then it's a book you don't expect, and something like really happens. So it's like. फैंस को क्या देना? बहुत सारा हक. Go read the book. It's a very good life. ये. थैंक यू सो मच. Thank you so much. थैंक यू सो मच. परम और हर्षिता, हम आपसे जानना चाहेंगे ये अकेले परम और हर्षिता से जानना चाहेंगे, नेवर किस योर बेस्ट फ्रेंड. आपको जो सादा हक का जो बेस्ट फ्रेंड का रोल चला, कहीं उसी के जरिए आप एक बुक तो नहीं लॉन्च कर रहे? नहीं, देखो पहली बात है हम लॉन्च सुमृत शाही करके बहुत अच्छे राइटर है जो जिन्होंने साडाक लॉन्च किया है. उन्होंने ये बुक लॉन्च की है और उन्होंने इसलिए लॉन्च नहीं किए. शो में रणधीर और संयुक्ता बेस्ट फ्रेंड्स नहीं है, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है. उन्होंने ये लॉन्च किया है. लेकिन सुमृत, रियल आप लाइफ बताइए. में परम और हर्षिता बेस्ट फ्रेंड्स best friends बिल्कुल हैं. है. और उन्होंने आज तक किस नहीं किया. सॉरी गाइस. और वो दोनों बहुत अच्छे तभी फ्रेंड्स वो हैं. यहाँ लाने के लिए बेस्ट लोग थे, क्योंकि उन्होंने किस नहीं किया, पर वो बेस्ट फ्रेंड्स हैं. लेकिन इसलिए परम से पूछो तो नहीं जोक था. परम लेटर. ओके. तो आप सुमृत से पूछिए ये क्वेश्चन, उसके लिए बहुत परफेक्ट रहेगा कि क्यों उसने ये बुक लिखी और क्यों उसने साडाक के बाद ये बुक लिखी. क्योंकि हमारे लिए तो वी आर बेस्ट फ्रेंड्स एंड वी हैव नेवर किस्ड एंड वी एग्री टू द फैक्ट दैट बेस्ट फ्रेंड्स शुड kiss can be very with your boyfriend can get you with that emotional connect, but with a best friend can ruin your friendship also. But this book चुम्मा is यार, what a nice statement. Wait 1 second. हाँ बोलो. But this book is more about, I think it's more about, it's a lot more about friendship and relationship. It's about that true bond that you share with one guy in your life. Very nice. It's about And relationships. yeah, so you It's should, all about it's a relationship. must read. It's a must read. तो सोचा था कि इतना लंबा समय तक चलता, कभी हर्षिता और परम ने सोचा था इतना लंबा चलेगा ये सीरियल? नहीं. मैं देख रहा हूँ, बोलो. एक्चुअली आप नया काम भी स्टार्ट करते हो तो आपको लगता है, बिजनेस भी स्टार्ट करते हो आपको लगता आपने है कि आप बहुत लंबा चले. आपने ये लिविंग इंडिया न्यूज चैनल लॉन्च किया था तो आपको नहीं लगा होगा. तो जैसे हमें भी नहीं लगा था कि साडाक चलेगा, लेकिन वो चल गया. बिकॉज आप यहाँ पैन कर सकते हैं कैमरा. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दीज पीपल. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ देम. ये हमारा शो चला है. दे लाइक तो जब तक हमें प्यार मिलता रहेगा, तब तक सुमृत चलता पीछे रहेगा. दुर्जॉय खड़ा है, उनके वजह से, हमारे प्रोड्यूसर्स की वजह से
इसके वजह से Sadak is a इसकी वजह से- collective effort Collective. from the audience to the writers to the producer to the actors. सबने amazing अपना- effect दिया है. इस चैनल में सारे सीरियल खत्म हो गए लेकिन साडा हक अभी भी चल रहा कैसे पता चला आपको? ये आप ये कैसी पूरा बातें कर रहे हैं? पढ़ क्या है ये? इनको सब पता है। साडा चल रहा है अब बिकॉज बोलो सुमृत, इस बारे में आप ही बोल सकते हैं, हमारे में हम नहीं बोल है। पाएंगे। सास भी कभी बहू का रिकॉर्ड तोड़ दिया। चलो ये तो मैं नहीं बोल पाऊँ। ट्विस्ट एंड टर्न्स सर आपको तो ग्रुप हक देने का मन करता है बट ऐसा नहीं हुआ है. एक स्टोरी है, लकीली उस स्टोरी में इतनी ग्रेविटी है कि ऑडियंस को अच्छी लग रही है, तो उसको आगे लेके जाने का मौका मिल रहा है, तो क्यों ना लेके जाए. तो साडा हक अगर आप पहले एपिसोड देख रहे हैं, कभी उसमें कुछ कन्वेंशनल नहीं होता है. आप कुछ एक्सपेक्ट करते हैं और उसका कुछ एकदम उल्टा हो जाता है. तो आज तक वही स्ट्रगल है, वही हम कंटिन्यू कर रहे हैं और मजा आता है रोज अपने आप को चैलेंज करके. इस बार क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं? आप शो देखिए ना 6:30 PM मंडे टू फ्राइडे और 10 o'clock। और 10 o'clock. साथ में आप ये बुक भी पढ़ सकते हैं. 12:30 also. Thank you. Thank you. थैंक यू सो मच। खास चीज क्या है जो, आप दोनों आए अपने फ्रेंड्स के साथ देखो खास चीज़ यही है कि हमारे दोस्त ने लिखी है, जो हमारा राइटर है शो का, तो उसे सपोर्ट करने आया. उसकी राइटिंग बहुत अच्छी है, तो उसे सपोर्ट करने आया क्योंकि वो हमारे शो का राइटर है. इस शो की तरह मुझे लगता है बुक भी चलता जाएगा एक और बिल्कुल चलेगा. अगर मैं जो पढ़ता नहीं है बुक, वो उसने 70 पेजेस पढ़ लिए 2 दिन में, तो फिर बहुत बड़ी बात है. बहुत इंटरेस्टिंग बुक है. मेरी बहन ने पढ़ ली, इसने पढ़ ली. शो के दौरान शॉर्ट्स के दौरान बताइए जरा आप. आपने कहा 74 पेजेस आपने पढ़ा. हाँ जी, मैं आपको बता दूं, सबको बता दूं क्या पढ़ा है मैंने. नहीं बताना. थैंक यू सो मच. थैंक यू. मतलब ही नहीं बनेगा कि. बताइए आपका क्या एक्सपीरियंस था बुक पढ़ने के बाद. आप क्या पूछ रहे थे? नहीं आप हाँ, मैंने पूरी बुक पढ़ ली. इसलिए मैं तुझे कहीं लेके नहीं जाता. मैंने पूरी बुक पढ़ी है. आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक. इट्स अ जरा वेरी बताना. हमेशा रणवीर से संयुक्त आगे ही रही है. रणवीर It's okay. See, मार इसे मार. no, I think it's not about Sayukta being ahead of Randhir, but if there's only one person she wants to defeat is Randhir. So कौन that's है? why she's always Who is in it? that conflict with him. तो सादा हक के बाद और कोई न्यू सीरियल में दिखेंगे. पहले तो सादा हक चल रहा है, जब तक चलेगा तब तक हम हैं. उसके बाद सोचेंगे यार लाइफ में आगे क्या होने वाला है, किसने सोचा. फिल्म में आने का कुछ प्लान है. किसमें? टीवी एक्टर फिल्म में आने का आप लोगों का कुछ तुम फिल्म में जाओगे? हम कुछ भी अच्छा काम करना चाहेंगे. बेस्ट फ्रेंड्स है मेरे. नेवर. Whoever tomorrow if Sumrit writes a film, yeah, why not? I know. We have to do it. Exactly. थैंक यू सो मच.